Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a very quick short video आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं दोस्तों, which is about learning and also about how to look at the markets in a very simple way of applying the methods correctly. Uh, Before I move on to, I'm going to talk about patterns combining with bands and combining with RSI. Before I talk about that, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हुआ. ओवरऑल निफ्टी इन द लास्ट वीक क्लोज्ड नियर द लोअर एंड ऑफ द रेंज. वीकली बेरिश था, डेली बेरिश था, एंड सो इज बैंक निफ्टी. बट आज के दिन क्या किया वापस से मार्केट ने, फ्रॉम दैट रेंज विच इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन ऑफ 24,420, 24,370, 24,500, ये पूरा जोन ही है, जोन. वो जोन से फिर से मार्केट निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ, प्रायर डे हाई को निकाला, 24,570 को निकाला एंड वेंट अबाउ दैट लेवल. इट मैनेज टू क्लोज पॉजिटिव. नाउ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट creates from positional trading perspective, it does not create a lot of opportunities, but from scalping perspective it still provides a lot of opportunity, क्योंकि in scalping, in intraday scalping, you every day have to look at the markets like a fresh beginning and a fresh start. तो यहां पर अगर हम देखेंगे, प्रीवियस हाई के ऊपर बंद हो गया लेकिन ठीक है, वीकली अभी भी बेरिश है. तो यहां पर आई थिंक पैसा बनाने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ऑप्शंस के अंदर. ऑप्शंस में बनाना है तो बुल कॉल बनाओ, स्प्रेड बनाओ, और दो पैसा मिले तो लो और निकल जाओ. स्टॉप लॉस के साथ काम करो, क्योंकि इन केस शार्प मूवमेंट एक तरफ आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा. तो स्टॉप लॉस के साथ भी काम करना है, स्कैल्पिंग करना है और स्प्रेड बनाना है अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो. सो दिस इज द व्यू. आई थिंक ओवरऑल अभी फिलहाल वापस से बाय ऑन डिप्स पे आ गया मार्केट, लेकिन 50, 60, 70 पॉइंट्स का ही मूवमेंट मिलने वाला है, बिकॉज जब तक ये इवेंट चल रहा है एंड क्लैरिटी नहीं आ जाती, यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी इजीली, एंड दैट्स हाउ इट इज. ऐसे सिनेरियो में इट्स बेटर टू फोकस ऑन द मार्केट जहां बहुत क्लैरिटी है and we can see a lot of movement happening but in one direction, and we have a lot of opportunities. Yes, I am talking about crypto. यहां पर अपॉर्चुनिटीज है. रिस्क तो क्रिप्टो में ज्यादा होता ही है बिकॉज द वोलेटिलिटी इज हाई, बट द मार्केट इज ट्रेंडिंग एंड इट इज गिविंग द टारगेट्स लाइक वी एक्सपेक्ट इट टू बिहेव. एंड this is how you have to diversify across, and focus on the markets where the IVs are high, volatility अच्छी है, ट्रेंड अच्छा है, डायरेक्शन क्लियर है, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क वेल. सो फिलहाल एक्विटीज में निफ्टी में रेंज में है, और ऊपर में जो लेवल है 24,728 गेन का वापस टैग हो सकता है. नीचे में सपोर्ट आ रहा है मार्केट का अराउंड वही 24,430 का क्रूशियल सपोर्ट है. ये ब्रॉड रेंज में ही चलने वाला है, और इसके बाद में क्या करना है वो मैं आपको ट्वीट पे बताऊंगा. लेकिन ऐसे शॉर्ट वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो नीचे टैग करिए, लिखिए, कमेंट में डालिए. Now let me go on the chart and show you कि what's the opportunity that is lying on the crypto side and how to combine patterns, bands, RSI, simple methods को, simple technical analysis techniques को, how to use that across. And if you are liking these kind of videos, I need to know with your comments. Let me just share across my screen very quickly here. And if you are able to see the screen here, this is the Delta Exchange का platform where I am showing you the charts and everything. And you can clearly see that this is the PNL which I had on Ethereum. Buy किया था इस level पे, and we are already up from there. So approximately from these levels, you can see the crypto has moved by nearly 92%. That's huge, right? 90% of movement हो चुका है. That's the beauty of trend. Not only on crypto, that's the beauty of trend in any market that you are trading. Now, if you're looking at it, see the overall risk is there. Yeah, if you're looking at the crypto, if you're looking at these markets, risk to hai. But let us talk about some patterns. If you're looking at this overall movement on Ethereum, we can see after a good run up that we are seeing here, after a very good run up on Ethereum, we can see a classic consolidation which is going on over here. दिस इज अ पेनेंट. इसे पेनेंट कहते हैं, ट्राइंगल नहीं कहते, इसे पेनेंट कहते हैं. पेनेंट इज यूजुअली शॉर्टर पैटर्न्स राइट अनटू द वर्टेक्स. प्राइस मूव होता है एंड देन ब्रेक्स आउट, विच इज यूजुअली अ कंटिन्यूएशन काइंड ऑफ अ पैटर्न.
एंड यहाँ पर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी बाय साइड पे है. And we can clearly see this pennant formation happening even on, or triangle pattern formation happening even on the RSI. RSI भी पैटर्न बना रहा है ओवरऑल रेंज में, 50 के नीचे नहीं जा रहा है स्पीड मार्केट का. एंड इट्स अ गुड साइन कि आफ्टर अ गुड रन अप अ गुड कंसोलिडेशन इज हैपनिंग अराउंड, एंड दैट्स अ वेरी 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 गुड साइन फॉर अस. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट. ये मैं लाइन को यहां से निकाल देता हूं, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे आने के बाद में व्हाट वी हैव टू डू. सो डेली से एक ओवरऑल व्यू मिल गया व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. पोजिशनली अगर ट्रेड लेना है तो बाय साइड पे ट्रेड लेंगे, वहां पर अच्छा बनेगा. नाउ इफ आई कम टू दिस स्पेसिफिक चार्ट and if I look at simple price action, no complication, simplest price action data, you can see a multiple rejection has happened from this area. Can you see that? Multiple times there is a rejection. Multiple rejection is happening from here, and we can clearly see that. यहां पर मैंने ऊपर एक लाइन डाल दिया, and we can see multiple levels of rejection happening in this area. So we can see a reversal from here, reversal from here, reversals. So बहुत बार यहां से रिवर्स किया है मार्केट ने. We can clearly see this happening. Now once we see a reversal happening from these levels multiple times, which is known as a rejection. If I get an acceptance about it, ये प्राइस एक्शन की टर्मिनोलॉजी है. रिजेक्शन प्राइस एक्शन, ये मार्केट प्रोफाइल की टर्मिनोलॉजी है. रिजेक्शन फ्रॉम these लेवल्स, वी नीड एन एक्सेप्टेंस अबाउट दिस लेवल. सो 4495 अगर मैं देखूं, 4495 के ऊपर जाके ये अगर सस्टेन करता है, आइडियली 1 आवर कैंडल क्लोज चाहिए मुझे इसके ऊपर, वी विल हैव अ वेरी वेरी सुपर्ब कंफर्मेशन. थोड़ा अगर आपको लेवे देना है तो 4497, 4500 लेवल्स. सो 4500 पे अगर आ जाता है, वी कैन हैव अ वेरी सुपर्ब acceptance above the high, and we will also apply bends just to see what are the bends suggesting. Okay, so bends के हिसाब से ये लेवल 4507 है. We will be near the upper end of the band. इसका ब्रेकआउट अवेटेड होगा. सो मे बी 4510 के उधर बाय ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है. वी कैन बाय एट 4510 लेवल एंड देन मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ द लो विच एवर. अभी तो फिलहाल ऑन गोइंग है तो लो लगा नहीं है. लो बनने के बाद वी कैन प्लेस दैट एज अ स्टॉप लॉस, and then the target can be the other price action areas, which is 4664. This is the prior high, which will again act as a hurdle. So 4510 पे बाय, 4650 4660 का टारगेट, एंड नीचे का जो अभी फिलहाल ऑन गोइंग वो स्टॉप लॉस. रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे कितना हो रहा है, एंड मे बी बुक पार्शियल प्रॉफिट्स हियर एंड देन ट्राई टू कैरी द रिमेनिंग पोजीशंस ऑन द अपसाइड. If you look at the overall consolidation, we can clearly see it's a consolidation. There was a false break here, previous low के नीचे. I'll hide the bands. There was a false break, previous low के नीचे, reversal, again coming down, and now above this it will be a amazing opportunity. So 4500 थोड़ा लीवे देना है बैंड्स के हिसाब से. 4510, that's the zone, looking for an opportunity, and then we can scalp for around 140 points. Or if you want to ride bigger, then I think positionally भी बड़ा ट्रेंड मिल सकता है. So that's how you can trade even crypto looking at these methods. And then there is scalper activity. अगर आप scalp करते हो within 15 minutes, then the scalping fees is way too low. वहां से आपको मिलता है. And you can also trade on the options. The options IVs are just amazing. If you look at the options, this is Bitcoin. You can look at Ethereum, and the expiry is every other day. So you can look at different days of expiry, and you can see the IV is 60.8 का IV है यहां पर पुट साइड पे. एंड यू कैन क्लियरली सी द IV हैज बीन इंक्रीजिंग वंस यू गो अ लिटिल लोअर साइड. 60-65 का IV है. IV का मतलब होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी. हायर द IV, more is the risk, but more is the potential to make money also.
That's how the IVs can be defined. So what I'm trying to do now is trying to play light on the equity side, क्योंकि रेंज में है, ब्रॉडर है, स्कैल्पिंग कर रहा हूं, आप अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत टाइम से फंसा हुआ इंडेक्स। और यहां पर लाइक यू कैन सी पोजिशनली लेके रखा है खाली, एंड यू कैन क्लियरली सी हाउ हाउ अमेजिंग इट हैज मूव्ड नियरली 90 और 100%। लेकिन stop के साथ keep trailing it along with the stop, you can do that, and you can easily try to use the concepts, whatever concepts of time cycle, Elliott wave can be applied here as well. It's very much possible. In case you want to experiment, the link is down there, and also we have a community for क्रिप्टो ट्रेडर्स, लिंक है नीचे कमेंट में, तो वहां पर आपको जाके क्लिक करके चेक करना है। So that's about, I thought I'll come out with this kind of a short video, which is educational market view, and explain you about how to combine price action, look at patterns, combine with bands and this thing. अगर आपको ये short videos पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो कमेंट डालिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ ही में मुझे बताइए कि ये ऐसे वीडियोस मैं बनाते रहूं कि आपको डेली देखना है या वीक में एक बार देखना है या नहीं देखना है। लिखिए तो मुझे पता रहेगा, एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक मोर सच वीडियोस। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और भूलना नहीं नीचे जुड़ना मेरे साथ में इन द कम्युनिटी, एंड हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।